वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Welcome, dear devotees. We are reading from Canto 1 of Srimad Bhagavatam, chapter number 17. Title is Punishment and Reward of Kali. Our today's discussion starts from text number 22. I will read the Sanskrit, and Pankaj Prabhu, if you can read English translation. Canto 1, chapter 17, text number 22. राजोवाच धर्मं ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद्धर्म कृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्. Yes, Pankaj Prabhu. Hare Krishna, everyone. The king said, "O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of irreligious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. You are no other than the personality of religion." Hare Krishna. You are no other than the personality of religion. So here Parikshit Maharaj identifies bull as personality of religion. उनको पता चल जाता है कि ये bull है. अभी 3 or 4 verses before we saw that how Parikshit Maharaj was asking who you are. You are very white, as pure as lotus flower, and you a डेनिजन ऑफ एन हेवन, स्वर्ग से कोई आए हैं, देवी देवता आप कौन है, ऐसा पूछ रहे थे. एंड देन व्हेन बुल स्टार्टेड स्पीकिंग, when he said that it is very difficult to ascertain who is the cause of our own distress and why someone is hurting. हम किसी और को कैसे blame कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? It is very difficult to ascertain. There could be multiple reasons. We saw that how there could be an astrological reason. अपने खुद हम हमारे कर्मों के जिम्मेदार हैं, अपने खुद के कर्मों के फल होंगे. There could be many different reasons. On top of that, there should be a sanction of the Lord. So there could be multiple reasons. And how can we say that Kali is responsible to hurt me? And when Bull says like that, Parikshit Maharaj becomes very satisfied. We saw the text number 21. It says that Emperor Parikshit, when he heard Bull speaking like this, he became very satisfied. And then what Parikshit Maharaj says is our today's one. So what is Parikshit Maharaj saying? That you are in the form of bull, but you know the truth of religion. धर्म ये है, क्या है? Very complicated English, but we try to understand. You are speaking according to the principle जो धर्म में बताया गया है, rule. What is that? You are speaking according to the principle. And what is that principle? That the destination intended for the perpetrator of irreligious act. Try to understand this sentence. The destination intended for the perpetrator of irreligious act. जो पाप करता है, जो sinful activity करता है, उसका जो destination है, whatever punishment और पाप का जो फल है, जो बुरा काम करता है, उसका जो फल है, the same destination is intended for the one who identifies the perpetrator. So deep. देखो अभी परीक्षित महाराज who knows dharma and religious principle personified के बीच में बात हो रही है. So very high level of dharma we are trying to understand कि जिसने बुरा काम किया है उसको जो फल मिलने वाला है, और जो उसको आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट करता है, ब्लेम करता है कि इसने बुरा किया, इसने ऐसा किया, उसको भी वही फल मिलता है. द सेम रिएक्शन द पर्सन विल गेट, द वन हु आइडेंटिफाइज एंड द वन हु एक्चुअली डज. एंड ये सुनने के बाद परीक्षित महाराज इज सेइंग यू आर नो अदर देन द पर्सनालिटी ऑफ रिलीजन. यू नो द ट्रू धर्म. यू आर स्पीकिंग, आप जो बोल रहे हो, आपको धर्म पता है, ये धर्म का सिद्धांत है और आप जानते हैं ये. सो
When you are saying the same result is giving to the sinful person, and the same result will be awarded to the one who blames or who identifies the person who is doing that activity. ये सुनने के बाद Prabhupada explains this very nicely. I got really confused. ऐसा कैसे हो सकता है जो identifies the blames and usko bhi same reaction? But Prabhupada explains very nicely in this. The devotee's understanding is that no one is directly responsible without the sanction of the Lord. कोई कुछ भी करता है, there is a sanction of the Lord involved. So devotee understands, जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, whatever good or bad happens in our life is by the mercy of the Lord. जो भी है, whatever is happening in our life, there is a sanction of the Lord in that. So it's by the mercy of the Lord. Whatever is granted to us, Prabhupada writes in the purport, either benefit or loss, that is God sent. And thus it is by His grace, by His mercy. But Prabhupada explains very nicely in this that अगर कुछ अच्छा होता है, Prabhupada writes, in case of benefit, no one will deny that it is God sent. भगवान की दया से ये हो रहा है, ऐसा everyone will accept. अभी देखो कोई एग्जांपल ले लो, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पूरा टूट गया, लेकिन वो बंदा बच गया, तो ऑटोमेटिकली दिल से भगवान की दया से हम बच गए. इतना भयानक एक्सीडेंट था, पूरी गाड़ी टूट गई, लेकिन भगवान की दया से हम बच गए. कोई बीमार हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो भगवान की दया से वो ठीक हो गए. एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, बिकॉज ऑफ कृष्णास मर्सी आई गॉट गुड ग्रेड्स इन द एग्जाम. क्रिकेट में भी आप देखो, सचिन तेंदुलकर जब भी सेंचुरी बनाएगा, बैट ऊपर उठाएगा, ही लुक्स इन द स्काई. When something is happening good, Prabhupada writes, in case of benefit, no one will deny that is God sent, कि भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है. No one will deny that. सब मानते हैं कि भगवान की दया से. But in case of loss or reverses in life, जब कुछ प्रॉब्लम आता है लाइफ में, रिवर्सल्स आते हैं, स्ट्रगल्स होता है, और कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, देन व्हाट हैपेंस? पीपल बिकम डाउटफुल that भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे लिए. How it is possible that Lord is so unkind to his devotee? भगवान ऐसे अनकाइंड कैसे हो सकता है? इतना स्ट्रगल लाइफ में, ऐसा रिवर्सल सिचुएशन, सम प्रॉब्लम आ गया, बड़ा चैलेंज आ गया, कैसे हो सकता है? हाउ कैन लॉ इन केस ऑफ गुड everyone agrees, yes, भगवान की दया से ठीक हो गया. In case of bad, how is it possible that Lord is sending this struggle in the life of a devotee? होता है कि नहीं devotee? Can you all relate? It's so, Prabhupada writes, कितना deep purport है इसमें, in this couple of lines by Bull. By God's grace, devotee's understanding is, it is Bhagwan, Lord has sanctioned everything. So devotee tolerates all reverses in life. And ये जो Bull बताता है, Parikshit Maharaj observes this, and therefore he understands, ये जो बुल बोल रहा है, that is nothing other than he is the personality of religion himself. In other words, Prabhupada writes again, a devotee has no suffering at all in life. Very high philosophy. Theoretically we can understand, practically it's on a completely different level. Prabhupada writes, in other words, a devotee has no suffering at all, because that so-called suffering, Prabhupada writes, so-called suffering is also God's grace for a devotee who sees God in everything. ये भी जो डिवोटी है उसके लिए, जहां पे सब जगह भगवान है, everything is happening by the mercy of Lord, this so-called suffering is also mercy of the Lord. और ऐसा नहीं प्रभुपाद से बोल देते. अभी हम, when I was trying to understand this, when I reflect on Srila Prabhupada's lifetime, some of you are preparing for Lilamrita exam. अभी देखो Srila Prabhupada's factory, he was a businessman, he has a pharmaceutical company, his some of his workers, they stole, they were stealing from the factory, and Prabhupada could, instead of blaming, इधर क्या हो रहा है, instead of Bull blaming Kali, he is understanding the God's plan in this. In the same way, when the stealing was happening in Prabhupada's pharmaceutical company, he could understand that Krishna doesn't want me here. There is some other plan happening. And once Srila Prabhupada's factory got burnt, pura pharmaceutical company manufacturing, it got burnt.
And Prabhupada can understand this is Krishna's indication. ये भगवान का आशीर्वाद है. I need to know that I don't belong here. There is something else destined for me. प्रभुपाद कितना सारा हार्ड वर्क करते थे इंडिया में. झांसी में द लीग ऑफ डिवोटीज का एस्टेब्लिश किया. इतने सारे मिनिस्टर्स को, लोकल पॉलिटिशियंस को लेटर लिखते थे खुद. रास्ते पे जाके बैक टू गॉड हेड मैगजीन्स. ही ट्राइड टू गिव लेक्चर्स. ही ट्राइड सो मच इन इंडिया बट नो सक्सेस एट ऑल. So good knowledge, everything was there, but no success at all. बाहर के देशों में हम देखते हैं what success Prabhupada got, but India no success. झांसी में he had only one disciple बस, और वो भी League of Jhansi had to be shut down. तो what is happening in case of struggle, in case of so-called suffering, challenging situation, a devotee understands this is the mercy of the Lord. Prabhupada understood that I am meant for Paschatya Desa, Western countries, not for India. So all this, अगर इंडिया में सक्सेसफुल हो जाते, इंडिया में पूरा League of Jhansi, everything is settled, all the devotees are becoming, then he will not go to the West. अगर वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाश्चात्य देशों में जाते नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड दिस ग्लोबल मूवमेंट विल नॉट हैपन. हम क्या करते, अभी सोते. Today, Monday morning, 6:30, if Prabhupada had not traveled to the West, if he hasn't established center all around the world, I can guarantee at least about myself, I would be sleeping right now instead of studying Srimad Bhagavatam. So Prabhupada is not only giving the theoretical, but we can see he is sharing his realization, understanding for the benefit of us, that so-called suffering जो भी आता है, challenging situation in life, that is all mercy of the God for us. How we can understand? It may take a time. Instead of blaming others, इसने वो किया, इसने वो किया. See, Prabhupada writes here in the purport that the cow and bull never placed any complaint before the king. किंग जैसे ही किंग को देखा, काउ एंड बुल डिडंट कंप्लेन, ये मुझे मार रहा है, ये ही द कली इज हर्टिंग मी. दे डिड नॉट प्लेस एनी कंप्लेंट बिफोर द किंग, बीइंग टॉर्चर्ड बाय दिस पर्सनालिटी ऑफ कली, कि मुझे टॉर्चर कर रहा है. आजकल क्या होता है, एवरीवन गोज एंड कंप्लेन, और वी एटलीस्ट इन आवर लाइफ वी ट्राई टू ब्लेम. इसने ऐसा किया, इसने ऐसे किया, दिस पर्सन हैज डन दिस टू मी, दिस पर्सन स्पोक लाइक दिस पर्सन एक्टेड लाइक दिस. बट हियर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर ऑफ द बुल, जो बुल ने कंप्लेन नहीं किया, एंड ही सेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ascertain who is actually responsible. The extraordinary behavior of the bull made the king conclude that the bull was certainly the personality of religion, the Parikshit Maharaj. Srila Prabhupada also writes in the purport about the example of Lord Jesus Christ. Jesus Christ was seemingly put into such a difficulty. Crucify कर दिया था, being crucified by these ignorant people. But last moment, if you know the story of Lord Jesus Christ, first from birth up to year 12, he stayed with his parents in Nazareth. He stayed there. After 12 to 30 years, that 18 years of his lifetime, it's called in the Bible, it's called the silent years or the lost years. There is no description mentioned in Bible where was Lord Jesus from year 12 to 30. And after that 30, it is said in Aquarian Gospel, it is said that Lord Jesus he came to India, he stayed in Banaras, he stayed in Dwarka, he stayed in Jagannath Puri. Most of the time he associated with devotees, he learned so many spiritual things. Everything is there in Aquarian Gospel. And then after 30, he comes back to Nazareth and he starts preaching. And when he starts preaching, because of, he developed a siddhi also, that he can cure the sick people. कोई blind है तो उसको touch करेंगे तो he can get the vision back. He can make, if a dead person is there, he can make him alive. ऐसे सिद्धि होती है devotees के पास जब वो, and that is all called side benefit of bhakti. But when Lord Jesus came and started preaching, the Roman people or Jewish people, they saw him as a threat because he was gaining popularity. तो ये पूरा लंबा story है. He was crucified, but when he was being crucified, he says, "Oh Lord, please forgive them. They don't know what they are doing. Oh Lord, please forgive them." So देखो, either also the same Prabhupada connects with that instead of blaming, instead of, क्योंकि
What is the reason mentioned in the translation? The same destination intended for the perpetrator of irreligious acts. जो पाप करता है लेकिन जो उसको ब्लेम करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि इसने ये ऐसा कर रहा है, बंदा ये ऐसा कर रहा है, उसके लिए भी सेम डेस्टिनेशन है. So we see in the example of Lord Jesus also that he says, "Oh Lord, please forgive them." Instead of blaming them, Jesus is saying, "Please forgive them because they don't know what they are doing." So here we see the cow and bull never complained, and because of that, Parikshit Maharaj understands that his religious principles personified. वो धर्म है. चलो next 33 अंशुल प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद 23. डिवोटीज. प्रभुपाद की जय. अथवा देव मायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Thus, it is concluded that the Lord's energies are inconceivable. No one can estimate them by mental speculation or by word jugglery. Thank you, Prabhuji. Thank you. So it is said the Lord's energies are inconceivable. हम समझ नहीं सकते भगवान का क्या प्लान है, ये सब कैसे हो रहा है. We can't understand. Lord's energies are inconceivable. We can't say, we can't estimate that mental speculation. अपने खुद के सोच के mental speculation से we can't understand Lord's energy. And by word jugglery as well. You know, many people, they are very good speakers. Words को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, इतना अच्छा अच्छा बोलेंगे, and they give lectures or they give so many talks and people starts following. YouTube में हजारों follower होंगे, लाखों follower होंगे. But Prabhupada says here, no one can understand Lord by mental speculation or word jugglery, because भगवान की जो माया शक्ति है, deluding this माया शक्ति, it is very inconceivable. It's very Prabhupada writes, इसमें परपट में लिखते हैं, the proportion of measurement is inexplicable. हम समझ ही नहीं सकते वो कितना डीप है, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है. सो हियर बुल वो कली को तो पॉइंट नहीं कर रहा. ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज सेइंग दैट कली इज नॉट हर्टिंग, बट इवन दो बुल नोज दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की दया से हो रहा है. कली इज नॉट, बुल इज नॉट पॉइंटिंग एट द लॉर्ड ऑल्सो कि भगवान कर रहे हैं. ही डिडंट से दैट लॉर्ड इज डूइंग इट. कली तो नहीं कर रहा, भगवान कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोलते. भगवान ही इज स्वराट, ही इज सुप्रीम, ही पूरा सुपर पावर, सुपर ब्रेन है. हम वेरी माइन्यूट, हम वेरी लिटिल, तिनके के बराबर है. हम कहाँ से समझेंगे? यू नो, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड लॉर्ड्स प्लान? इट्स इम्पॉसिबल. सो व्हाई बुल is not blaming the Kali, we saw कि किसी को पॉइंट नहीं करना चाहिए. बट वाई बुल इज नॉट अंडरस्टैंडिंग और पॉइंटिंग टू द लॉर्ड ऑल्सो कि ये भगवान करवा रहे हैं, ये भगवान कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं बोला? बिकॉज प्रभुपाद राइट्स इट्स बिकॉज ऑफ द माया शक्ति, इल्यूजरी एनर्जी. उसका काम ही है भ्रमित करना इन एनी सिचुएशन. यू नो, अगर आप देखो सही में, इफ यू ट्राई टू रिफ्लेक्ट इन एनी सिचुएशन, ऑफ कोर्स द अदर पर्सन वुड बी एक्टिंग अगेंस्ट अस, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है और भगवान का सैंक्शन भी है. बट ऑन टॉप ऑफ दैट कहीं ना कहीं हमारा हाथ भी होगा. इफ समथिंग इज हैपनिंग, अदर पर्सन माइट बी डूइंग रॉन्ग, भगवान का सैंक्शन भी होगा, बट समवेयर देयर इज आवर हैंड. वी आल्सो हैव डन समथिंग, कुछ भी तो किया होगा, इसीलिए हमारे साथ ये हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई instead of pointing, instead of blaming, instead of arguing, somehow we try to understand इसमें भगवान की दया कैसे है, और we try to improve. In our practical life also, dear devotees, sometimes in the relationships we have an argument between husband and wife or partner or whatever it is, we have an argument. Sometimes it's not required to prove our point कि मैं सही था, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं गलत हो. It is not required. क्या फायदा आर्ग्यूमेंट करने का? We have to see in our that situation, when there is a, for example, argument in the relationship, are we here to prove that we are right, or we want to improve the relationship?
What is more important? Prove that ourselves is right in the relationship or we want to improve the relationship. कई बार सॉरी बोलने से ठीक है, चलो जो होता है उससे रिलेशनशिप अच्छा रहता है, आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो ठीक है, सॉरी बोल दिया, काम खत्म हो गया. अपने को सही समझाने के लिए, नो आई एम राइट एंड ब्लेमिंग दैट पर्सन, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, वो प्रूव करने से क्या हासिल होगा? व्हाट डू वी गेट बाय? Sometimes the relationship to maintain is more important. So whenever something is happening, like in our practical life, argument is happening, are we there to prove that we are right in the relationship, or we are here to improve the relationship? उन दोनों में से चूज करना है. If we want to improve, then forget it. क्या सही, तुम सही, मैं सही, क्या हो रहा है, just forget it. I said in Bhakti Vrikshana before, a person who says sorry when he is wrong is called a gentleman. A person who says sorry when he is wrong, उसको पता है वो गलत है, sorry बोल दिया, is a gentleman. A person who says sorry when he is not sure, पता नहीं है फिर भी sorry बोलता है, he is called a wise man. A person who says sorry when he is not sure, he is a wise man. A person who says sorry even though he knows he is right is called a husband. पता है क्या सच है क्या गलत है, सॉरी बोल दो, काम खत्म करो. चलो 24 नंबर कौन पढ़ेगा? राधिका माता जी. Hare Krishna, everyone. Tapa socham daya satyam iti pada krite kritaha adharmam shastrayo bhagna smay sanga madestava. In the age of Satya, truthfulness, your four legs were established by the four principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. But it appears that three of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women, and intoxication. Hare Krishna. वेरी गुड. कौन बोल रहा है ये? राधिका माता जी. हु इज स्पीकिंग दिस? और एनीवन? Parikshit Maharaj is speaking. Yes, Parikshit Maharaj is speaking. Always remember the context. कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? See why Parikshit Maharaj speaking that in the age of Satya Yuga your four legs were established, because now he identified the bull is dharma. तो अभी उनको पता चला ये धर्म है. जब कब पता चला? That when dharma spoke like this, that we don't identify, क्योंकि किसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो जो सिंफुल रिएक्शन डूअर को होता है वो आइडेंटिफायर को भी होता है. सो व्हेन ही स्पोक लाइक दिस, परीक्षित महाराज अंडरस्टूड हिज धर्म एंड नाउ ही इज स्पीकिंग इन द एज ऑफ सत्य. और सत्य युग में क्या होता था? दिस फोर लेग्स वर एस्टैब्लिश्ड. धर्म की स्थापना पूरे से हो रही थी उधर. The four principles of dharma, I remember this as MACT, M-A-C-T, MACT: mercy, austerity, cleanliness and truthfulness. तो वो चार जो थे स्तंभ, धर्म के जो स्तंभ थे, वो अच्छे से मेंटेन हो रहे थे. बट व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड? बिकॉज ऑफ कलयुगा में प्राइड, लस्ट फॉर वुमन एंड इंटॉक्सिकेशन, उससे वो जो थ्री लेग्स ऑफ धर्मा है दैट आर गॉन, and only Satyam, the truthfulness, little bit of left. Srila Prabhupada writes in the purport, इसमें importance of Bhagavatam in the purport. Because of pride, lust for women, intoxication, drinking wine, smoking, tea and coffee, chewing tobacco, Prabhupada writes, this dharma is gone. But Bhagavatam is very important. Srila Prabhupada purport में लिखते हैं, Bhagavatam reading will automatically make everyone clean inside and outside. अंदर से बाहर से ये सब कुछ जो अनर्थास है, लस्ट है, प्राइड है, इंटॉक्सिकेशन है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, चीविंग टोबैको, all these things, just Bhagavatam reading will automatically, no extra effort is required. Prabhupada is writing, Bhagavatam reading will automatically make everyone clean inside and out. And in this way, there will be peace in the whole world. पूरी दुनिया में शांति तभी आएगी जब भागवतम पढ़ सकते हैं. Everyone will live. Prabhupada writes in the purport that if rich people or leaders of the society use 50% of their accumulated wealth
in spreading the message of Bhagavatam, certainly, Prabhupada uses the word, certainly the age of Kali will be defeated. Kali Yuga so powerful, Maya so powerful, but certainly the age of Kali will be defeated if the rich people or leaders uses 50% of their accumulated wealth in Bhagavatam. ये सब आप सबके लिए है. Rich people, leaders of the society, use your wealth to spread the message of Bhagavatam, and we can defeat the age of Kali. So strong, bold statement Prabhupada is writing. Bhagavatam is so important. 25. Who wants to read? Krishna Prabhu? Krishna Prabhu can read Sanskrit. Varinder Prabhu can read English translation of text number 25. Hare Krishna, Prabhu. Text 25. Idanim dharma padaste satyam nirvartayet yata tam jigrasyati adharmoyam andritenaidati kalihi. Hare Krishna. Translation. You are now standing on one leg only, which is your truthfulness, and you are somehow or other hobbling along. But quarrel, personified Kali, flourished by deceit, is also trying to destroy that leg. Haribol. So Parikshit Maharaj understood what is happening here, and he is saying that you are standing on one leg only. बाकी जो 3 लेग थे, they are broken. धर्म के जो 3 स्तंभ थे, which is, और कौन सा बचा है, which is your truthfulness. Only that one is left, and somehow that is also hobbling along. But quarrel personified, the Kali flourishing by deceit, is also trying to destroy that leg. So Prabhupada writes in the purport, these 4 things: austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. ये 4 बहुत जरूरी है. Prabhupada is writing in the purport, these 4 things must be taught to the mass of the people. सबको ये सिखाना बहुत जरूरी है. From childhood, the mass of people must be taught to practice these principles from childhood. ये बहुत जरूरी है. Austerity, आजकल क्या हो रहा है, fasting. Prabhupada gives the example of fasting, that it should be done for a spiritual progress. But austerity कहाँ है? जो खाने का मन किया, जो किया वो कर लिया. Austerity, how many people are even trying to be austere? आजकल कहाँ होता है? Even though some people are doing fasting, but some other ulterior reason, जैसे अनशन पे चले जाएंगे, some political reason के लिए उस पे बैठ जाएंगे, या for some personal reason, personal benefit के लिए कोई fasting करता है. Here, Prabhupada writes in the purport that austerity must be done only for spiritual progress. और किसी वजह से लिए it's condemned in Bhagavad Gita. Prabhupada writes 17.56. Austerity should be done, fasting should be done only for the spiritual progress. Second is mentioning about austerity, और उसके बाद है cleanliness. Cleanliness, external and internal cleanliness, both is required. External cleanliness, people give so much of importance. Everything clean, especially हम अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं और वेस्टर्न कंट्रीज, everything बाहर, रोड साफ, गार्डन साफ, घर पे everything is clean. Opposite the temple, I live near to the temple beach. Every morning they clean the whole beach, sand, everything, पूरा अच्छे से साफ. But what about internal? बाहर सब कुछ clean, अंदर सब कुछ कचरा. People spend so much of energy, time in external cleanliness, but what about internal cleanliness? अपना कॉन्शियसनेस है, अपना माइंड है, ये सब कचरा देख के इतना भ्रमित हो जाता है, इतना खराब हो जाता है. हाउ कैन वी क्लीन दैट? उसका क्लीनलीनेस, दिमाग का कॉन्शियसनेस का क्लीनलीनेस कहाँ पे पीपल आर ट्राइंग टू डू? क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड इज वेरी नेसेसरी. एंड प्रभुपाद बोलते हैं, Prabhupada is amazing. एक line, if you read the purport, oh my God, so amazing. Prabhupada writes, this cleanliness of the mind is necessary. And how can one achieve that? It will only be achieved by glorifying the Supreme Personality of God.
भगवान का जो संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम की जो ग्लोरीज गाएंगे, जो नाम करेंगे, हरि नाम चैंटिंग करेंगे, द क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड इज नेसेसरी and it will only be happening by glorifying the supreme Lord. That is what Prabhupada is telling, and that's why we chant. Very important to do chanting. Even Bhagavatam reading, that is glories of the Lord, very important. वो सब बहुत जरूरी है. ये सब, we have to make sure that we are in the association of devotees. हम भक्ति के पाथ में भी है, लेकिन we are in the right track. हम जो साधु संग करते हैं, अच्छे से साधु संग मतलब वी आर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, श्रवणम हो रहा है, अपनी साधना अच्छे से हो रही है, वी आर चैंटिंग नाइसली, मॉर्निंग प्रोग्राम हम ट्राई कर रहे हैं, वी आर रीडिंग स्क्रिप्चर्स, श्रवणम लिसनिंग भी हो रहा है. We have to make sure as devotees that our sadhu sangha or our devotional practice doesn't become like a socializing, जहाँ पे गए, बैठे, बातें की, अच्छा अच्छा खाया, प्रसाद लिया, कीर्तन में मजा आ गया और फिर बस. No, we want to make sure that we do our devotional practices in a very nice way, proper way which is recommended by Prabhupada, where our sadhana is pakka, our shastra reading should be pakka, our seva should be pakka, our shravanam should be pakka. Very nice. Then only we will have this effect, the Kalika effect, हम defeat कर पाएंगे. Prabhupada writes in the purport, by pride आता है तो austerity is spoiled. कभी कभी डिवोशनल सर्विस में भी प्राइड आ जाता है. मैं इतना अच्छा कीर्तन करता हूँ या करती हूँ, मैं इतना अच्छा 56 भोग भगवान के लिए बनाता हूँ, ऐसा कोई नहीं बना सकता. आई एम इन दिस पोजीशन का भी प्राइड आ जाता है. आई एम इन दिस पोजीशन इन द टेम्पल. सो बाय व्हेन द प्राइड कम्स, आउटसाइड वर्ल्ड में भी है और इंटरनल डिवोटी वर्ल्ड में भी आ सकता है. व्हेन द प्राइड कम्स, ऑस्टेरिटी इज स्पॉइल्ड. By too much affection for female association, Prabhupada writes, cleanliness is spoiled. Addiction to intoxication, mercy is spoiled. And lying propaganda, galat bolne ka, if it's lying, truthfulness is also spoiled. So Prabhupada is writing here, the revival, last line of the purport, if you all can read, Prabhupada writes, the revival of Bhagavad Dharma can save human civilization from falling prey to the evils of all description. Very nice, very strong message. Last one, 26 पढ़ लेते हैं. There is no purport, I think. No purport. 26. कोई है क्या? पूजा माता जी, विठलानी माता जी. And then Preeti can read the translation. Hare Krishna. Iyam cha bhurmi bhagvata nyasito rumarasati Srimadhistaspat dasnya sayha sarvata kruta kautuka. Hare Krishna. Translation. The burden of the earth was certainly diminished by the personality of Godhead and by others as well. When he was present as incarnation, all good was performed because of his auspicious footprints. Thank you. So Parikshit Maharaj is saying, yes, all this was happening before, जो हमने previous verse में हमने पढ़ा. But when Krishna was present, it was all good. Auspicious footprints of the Lord was present and everything was taken care. अभी आगे क्या बोलते हैं, we will see tomorrow from text number 27. Any questions, comments? Very deep. Can someone record the 22 का परपट कोई अच्छे से प्रभुपाद का रिकॉर्ड करके पोस्ट ग्रुप में डालना प्लीज. वेरी नाइसली, क्लियरली रिकॉर्ड. एंड 22 इज सो गुड. आप 25 बार पढ़ोगे ना, यू विल गेट ए न्यू रियलाइजेशन. आई कैन टेल यू, इफ यू रीड अगेन एंड अगेन, एंड इट विल हेल्प इन लाइफ हाउ टू सी द चैलेंजिंग सिचुएशन इन आवर लाइफ. क्वेश्चंस, कमेंट्स? हाँ, thank you so much, Pooja Mata ji. Okay, we'll stop today. We'll start from text 27. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Pooja. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, devotee. Hare Krishna.